starts with organic compounds. Organic compounds deal with elements that mainly constitutes of कार्बन कार्बन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं देन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आते हैं हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या चीजें होती हैं which have hydrogen and Carbon. yes compounds of carbon and hydrogen. Organic compound could include other elements as well, which might be oxygen, OH group, functional groups could be added to that. But when it comes to hydrocarbons, they mainly deal with the carbon and hydrogen. Then, before jumping into the organic compounds, into any further detail, the first thing that we need to know is the functional groups, which is basically synonymous to homologous series. Functional groups basically we deal with four, which are alkanes, alkenes, alcohols, and carboxylic acid. And we have studied that in our syllabus, in your book as well, that alkanes are converted to alkenes by catalytic cracking. Alkenes are converted to alcohol by hydration. And alcohols are converted to carboxylic acid by oxidation. Do you remember that? हमने discuss किया था इसको. J. So catalytic cracking. So when it comes to functional group, we mainly deals with alkanes, alkenes, alcohols, and carboxylic acid. At the same time, we discuss what homologous series are. How do we define homologous series? Compounds that have the same chemical properties. Properties, very good. A family of organic compounds with the same functional group and similar chemical properties. They also have two more things in common. वो क्या होती है? The general formula and the trend of boiling Increases point by and CH2. Yes. Hmm. And that point is gradual change in physical property as we go down. Yes. फिर हमारे पास नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक What's कंपाउंड्स आ the जाते हैं. sorry, what's the difference between the physical and chemical properties of homologous series? Physical properties deals with the physical appearance of and chemical properties deal with how they react chemically with each other. Oh, so like by chemical reaction, is it like the boiling point and the viscosity? No, Or melting and boiling no? point densities, yeah. What about the viscosity and volatility? Yes. Okay. Volatilities with the वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आ जाती है ना इसके अंदर. Hmm. So when it comes to physical properties, high melting and boiling point, high density, when it comes to chemical properties, oxidation and stuff like that. Okay. So when it comes to homologous series का meaning नहीं है. आगे homologous series में we discuss the functional groups and
we deal with that mainly, and individually हम each and every functional group को जो है उनके properties को discuss भी कर लेंगे. The very first thing that we deal with is alkanes. Alkanes में हमारे पास क्या properties आती हैं? Alkanes also known as saturated hydrocarbons. Saturated सबसे पहले होता है. हम अब start करें with the very first functional group which is alkanes. Alkanes में हमारे पास जो है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, containing only single bond between carbon. इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? CnH2n प्लस 2 हमारे पास. और क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इट चेंजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड वी नो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उनके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं. अल्केन्स की अगर हम एक जेनेरिक प्रॉपर्टीज को राइट डाउन करें कि जो हम अल्केन्स की हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो उसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या आता है? Single bonds? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पॉइंट आ गया ना उसमें हमारे पास. Oh, like the chemical property? प्रॉपर्टी है. The boiling point increases as the chain of alkanes increases. हम अब इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर मोस्टली insoluble in water and are soluble in organic solvent. And they're जनरल फॉर्मूला mostly हम लोगों ने gases. जनरल फॉर्मूला हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है. जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि CnH2n जो है वो हमारा आइसोमेरिज्म एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी हम लोग आएंगे. एंड पहले हम जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लें, तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वहां से आइसोमेरिज्म और उसको रिलेट करना हमारे लिए इजी होगा. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बट जब हम उसकी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो दे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द, उनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते हैं एज द साइज ऑफ मोलिकुलर साइज इंक्रीजेस. और इसके बाद हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था कि their melting point and boiling point increases as the size of chain increases. Melting point and boiling point increases as the size of chain increases. They become more viscous and less flammable. एंड इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अल्केन्स होते हैं वो मोस्टली अनरिएक्टिव होते हैं, एंड उसका रीजन यही है, अल्केन्स आर मोस्टली दे आर unreactive because of
single carbon-carbon bond. So the only form of reactions they give is the combustion reaction. And what was the other reaction? Substitution reaction. So जब combustion reaction की हम लोग बात करते हैं, so हमारे पास normally methane है. Methane is one of the famous alkane that we discussed for. CH4 plus 2O2 gives us carbon dioxide plus water, and again a lot of heat energy in the process. Whereas substitution reaction के अंदर and जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन जो है हमारे पास जो है वो क्या देती है हम लोगों को, कार्बन मोनोऑक्साइड देती है. एंड या substitution reaction, the only substitution reaction that they give is with chlorine in the presence of sunlight, and उसको हम photochemical reaction भी कहते हैं. And in this, अच्छा एक यहाँ पे I was walking through some points. एक substitution reaction होता है, एक addition reaction होता है. ठीक है. So if someone asks कि इन दोनों में difference क्या होता है, एडिशन रिएक्शन के अंदर ऑब्वियसली एज अ नेम इज इन वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. और नॉर्मली ये अल्कीन्स हमें ये रिएक्शंस देते हैं, जैसे हमने वो हाइड्रेशन एंड हाइड्रोजनेशन लेटर ऑन जाके पढ़ना है ना. दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शन. एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उस इनटू द रिएक्शन. जब वो रिप्लेसमेंट होती है किसी चीज की, तो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. तो CH4Cl2 will give us CH3Cl प्लस HCl. सिमिलरली अगर हम लोग उसमें ऐड करते रहेंगे, ये मोनोक्लोरोमीथेन बन जाएगा हमारे पास. फिर अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक और क्लोरीन इसमें ऐड कर देते हैं, CH2Cl बना देते हैं, CH2Cl2 बना देते हैं, तो मेरे पास ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा. अगर हम एक और क्लोरीन इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये ट्राइक्लोरोथेन बन जाएगा. एंड एट द एंड हमारे पास जो है CCl4 बन जाएगा प्लस HCl plus HCl, and this is normally known as, जो ये हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है ना, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म्स. ठीक हो गया. एंड जो टेट्राक्लोरोमीथेन है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. सॉरी मैंने एरोहेड रॉन्ग बना दिया. जो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है वो उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं. जो ये CCl4 होता है विच इज टेट्रा chloromethanes is basically used as a solvent, and ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है हमारे उसके अंदर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है. एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी इसकी हाई होती है एंड टेक्स अवे द डर्ट एंड एवरीथिंग विद दैट. So that is for alkenes. When it comes to alkenes, before getting into that, I think so we should discuss the isomerism and जो हमारे पास आती है, yeah, isomerism and how to name the compounds. So naming of the compound के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो point आता है which we discuss is, hold on, my वो isomerism को हम लोग कैसे define करते हैं? How do we define isomerism? Um, same structural formula, but no, same molecular formula, but different structural formula. Formula, yes. Hold on. When it comes to naming of the compounds, the first thing that we keep in mind is the first part of the organic compounds give us the number of carbon, and the second part gives us the functional group जो उसमें attached होता है. For example, अगर हम this if it has the following we remember normally: meth, eth, prop, but,
pent, hex, hept, oct, nen, नोनेन होता है वैसे बेसिकली नोन एंड व्हाट वाज द लास्ट 10 कार्बन्स के Deck. लिए क्या यूज करते हैं डेग या टोटली स्किप्ड ऑफ माय थैंक यू इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 if the functional group is alkane so it would be methane. If the functional group is ene, it would be ethene. If the functional group is alcohol, so it would be methanol. Then ol will tell us that it's a OH functional group. Ene will tell us that double bond is a functional group. Ene will tell us the single bond. And the last functional group that we discuss is carboxylic acid. So methanoic acid. So this OEic part tells us that the functional group is COOH. The first part of the organic compound tells us that give us about the information about the number of carbons, and second part tells us about the functional group. So the second thing that we needed to discuss was the isomerism. Isomerism को हम कैसे define करते हैं? Isomerism or is a process, yeah, isomers are organic compounds having same molecular formula but different structural formula. This means that the number of carbon and hydrogen and everything would remain same. The only thing that would change in is the structure. एंड ऑब्वियसली उनके रिस्पेक्टिवली जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो चेंज भी होते हैं फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10 और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा 1 2 3 4 कार्बन्स विद रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स दिस इज ब्यूटेन एंड अगर हम इसमें से कोई एक उसको रिमूव कर देते हैं we remove this functional group. Why isn't this working? Or is it working but I couldn't see it? Anyhow, if we Don't move worry. this functional group to this part, to the first carbon, it's already attached to this carbon. If we move this to the second carbon, then it would become the first carbon, this carbon with its respective hydrogens remains as it is. सेकेंड कार्बन के साथ आके ये ग्रुप अटैच हो जाएगा CH3 का ये उसका हाइड्रोजन एंड सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेस है कार्बन के साथ नाउ इट वुड बी CH. So we could see that we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hydrogens here. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Equal number of hydrogens into both. And 1, 2, 3, and 4 carbons. 1, 2, 3, and 4 carbons. So they have the same molecular formula, but structure wise they vary from each other. So this is, as the functional group here is the methane group, and whenever an alkane becomes a functional group, it's called alkyl. So whatever the functional group is, if it's methane, it would be called
methyl group. If it's ethane, it would be called ethyl, and so forth and so on, whatever the functional group is, C2H5 and so this is butane, this is methyl propane. Now we could see the functional group of the isomer is written first and then the remaining carbons of the longer chain is mentioned, and N again tells us that the homologous series is that from it is in that particular thing. So they have different arrangement of atoms, and their physical properties vary. Can you Differ from write each the other. structural formula for the second one? From each other. Differ from each other. Then uh, alkenes. अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? CnH2n. Yes. Alkenes are second group that we have is alkene, and they are unsaturated hydrocarbons, which means they have carbon-carbon double bond, and general properties आती हैं हमारे पास. Again वही है कि as we go down, their melting and boiling point increases. There are different multiple types of reactions that alkene gives, and they are combustion and addition reactions. सो जो एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास आता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर हम लोगों को अल्केन्स लॉन्गर चेन ऑफ अल्केन्स को कन्वर्ट करना है, हम उसको कैटालिटिक ब्रेकिंग के थ्रू अल्केन्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अल्कीन्स के अंदर हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर. फिर हमारे पास इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, एंड इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n. इसके आइसोमेरिज्म्स को अगर हम लोग डिस्कस करें तो अगर हम लोग इसका अगेन ब्यूटीन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें अगर हम लोग उनकी मूवमेंट ऑफ आइंस करते हैं, आइंस कह रहा हूँ सॉरी, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड कर देंगे. अभी हमारे पास बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सिंगल उसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ ब्यूटीन, और अगर मैं इसको मूव कर दूं टू दी नेक्स्ट कार्बन एंड एट द सेम टाइम उसका फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज कर दें, या अगर हम लोगों ने सिर्फ जस्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, ये वहां पे ये आ गया. देन कार्बन के साथ हमने अटैच कर दिया मिथाइल के फंक्शनल ग्रुप को, एंड ये डबल बॉन्ड कार्बन का एज इट इज रह गया. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
methyl protein. What if they ask you to Move draw the an bond. isomer of, no, to draw an isomer of bent one? Okay. So when it comes to naming of the compounds, we have studied the nomenclature. I'll get back to it again about the meth, eth, ane, ene, ol, and oic thing we have studied in the previous lecture. Now, as you could see on the screen, what do you see on the screen? The first thing, the first structure is this one. And that the first thing that we need to keep in our mind while naming the compounds is to go for the longest chain. So the longest chain is, which one is the longest chain? The second one. Is it going straight or going like this? Uh, like The U shape. from Okay? right to, The U shape. yeah. So if we go and follow the U shape part, we know that how many carbons do we have? One, two, three, four, five, and six, which means the first thing that is going to be hex. Now, this will be considered, we already have discussed ये कौन सा group है? This would be methyl and it's attached to the third carbon. How do we know it's the third carbon? This is the first carbon, second, third, fourth, fifth, and sixth. So this is attached to third carbon, so methyl. So now let's name the compound. What is the name of the compound? 3, the position of methyl, 3-methyl hexane. So the second compound is, now we have multiple groups attached to it. So we are just going to use a straight change. How many carbons do we see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So 8 would be oct. For 8 carbons, we're going to use oct. And as there are single bonds, so octane. Now let's count the number of that attached to them. This would be, let me use a different color. This is first carbon, second carbon, third carbon, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. So we have a methyl group attached to second carbon. We have another methyl group attached to fourth carbon. We have a chlorine attached to the third carbon, and we have an ethyl group attached to four carbon. So we go alphabetically. When it comes to functional groups, na, we go alphabetically. So we'll name 4 ethyl, 2, 3 methyl, dimethyl, sorry, because 2 वो attached है. बल्कि सॉरी, सबसे पहले कौन सा कार्बन अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा आएगा? क्लोरीन. तो दैट वुड बी 3 क्लोरो, 4 ethyl, 2 and 4 dimethyl octane. Are we clear? Yeah, but it's so weird. But do you understand it? What rules did we Can you do follow more? for naming of the compounds? The first thing that we need to keep in our mind is go for the longest chain. Start numbering the carbon nearest
to functional group. And what was the third point? Naming should be alphabetical for functional groups. As we have discussed here, we have named chloro first because alphabetically C comes first, then E, then M, and end पे तो जो longest chain होती है उसका नेम आता है. ये इजी वन है. इसको इसको सबसे पहले हम लोग लोकेट करेंगे. इसकी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रही है? लाइक दिस. The straight chain. ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दिस इज वन, सेकेंड, third, fourth, and fifth. Now we have double bond. We have a methyl group attached to it. So, what? How would we name it? 3-methyl pentene. Why pentene? Because we have 5 carbons. One, I already have named it. Now let's go for this one. इसको हम straight chain में consider कर लें या हमें mover cross करना पड़ेगा? Which one? The last structure. हम इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है. Wait. 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है. Where? Like this. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 Oh. 4 5 and 6. Why did you skip 3? Which three? The third one. It's there. 1 2 3 4 5 and 6. No, the third question. Oh, third, I skipped it. Acha, I'll get back to it. Okay. Let's name this. We have a double bond with the second carbon. So, and how many carbons do we have? 6. And let's count the functional groups. Functional group is attached to this methyl to fourth carbon, this methyl, 2, 4 methyl. this methyl, 2, 4, and this methyl. So this would be 2, 4, 4 trimethyl hexene बनेगा ना? हाँ, 2 hexene. Cause जो Shouldn't it be 2 twos? हम्म It should be 2 twos because it no. also like there's a मैं उसको methyl in there too. मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को जो मिथाइल के हैं. फोर्थ कार्बन, What about the फोर्थ H3S? कार्बन, सेकंड कार्बन. सो 2 4 4 मिथाइल के लिए आ गया. एंड सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 2 उसका. एंड हेक्सीन कॉज वी हैव 6 कार्बन. व्हाट वर यू आस्किंग अगेन? What about the H3C? तो लिए तो हैं सारे हमने. There's 2, like there's एक ये है, एक ये है और एक ये है. यही फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं. बाकी हमारे पास the चेन, one like right. ये चेन है. Oh, okay. जो सर्कल्ड आउट है वो चेन है और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है उसके साथ. Okay. And when it comes to that, I'm just going to write the name of it. You'll figure this out yourself. It's 2 4 dimethyl. How many carbons do we have? 1 2 3 4 and 5. 2 4 dimethyl 3 pentanol. अब अगेन ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच था तो थर्ड
OH का ग्रुप था तो ओल आ गया, 5 कार्बन्स थे तो पेंट आ गया। सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच थे तो 2 and 4, मिथाइल एंड चूंकि 2 आ रहे हैं तो डायमिथाइल। ओके, Um, okay. now we have to draw the structural formulas. It's one pentene, so pentene hai, that means we will have how many carbons? One, two, 5. three, 4 and 5, and one shows के फोर्थ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो हम उसके साथ कार्बन अटैच कर दें, डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे। नाउ विल काउंट फॉर द हाइड्रोजन्स, तो H यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 इसके बॉन्ड्स पूरे हो गए। इसके साथ जब सिंगल हाइड्रोजन आएगा कॉज 1 2 3 and 4 इसके कार्बन के फुल बॉन्ड हो गए। इनके साथ 1 2 1 2 एंड यहाँ पे 3 आएगा। सो ये आ गया, ये आ गया। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आई मीन, 5 C5H. H10। ओके, Mm. एंड ये हो गया हमारे पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला। कल आपको इसको में भी इशू आ रहा था, दिस इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला। द वन वी हैव जस्ट ड्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सॉरी, Isn't that the displayed formula? सॉरी, सॉरी डिस्प्लेड फॉर्मूला, थैंक यू। दिस वन इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला एंड इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2 CH2. CH2 CH2 CH3। ठीक है। Mm. Let's skip this one cause we do not discuss alkynes in our structures, तो इसका डिस्प्ले फॉर्मूला रहने देते हैं। अब आ जाते हैं थ्री These ethyl। questions, they won't come in the IGs, right? Yes, it's Yes, they just for won't your come, or yes, they won't. understanding of everything when it comes to organic chemistry. Okay. 4 and 5 dimethyl pentane. So the first thing that we need to keep in our mind is we have how many carbons? 5. 1 2 3 4 5। ये वो हो गया। अब इथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है इसके साथ, किसके साथ है? Third थर्ड one. कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH2CH3। ये आ गया थर्ड कार्बन। फोर्थ, 1 2 3 4 and 5, फिफ्थ कार्बन के साथ CH3 अटैच्ड है, ये CH3 फिफ्थ कार्बन के साथ आ गया। इट्स 1 2 3 4 and 5। सो ये फिफ्थ कार्बन के साथ ये आ गया। फोर्थ के साथ भी अटैच्ड है CH3, तो ये CH3 आ गया। नहीं, फोर्थ के साथ है। सो हाँ, फोर्थ के साथ ये आ गया। इट्स कंप्लीट। Let's discuss the two ethyl. Can I try this? I'll give you another worksheet to complete all these questions. You can practice on them. So 1 2 3 4 and 5, इसके साथ CH3 आ गया, इसके साथ OH आ गया, एंड इसके साथ इथाइल आ गया,
CH2 CH3. Second carbon 1 2 3 4 and 5. So first carbon के साथ OH का ग्रुप आ गया. So it's one ol complete हो गया. Second carbon के साथ ethyl group आ गया and 5 carbon in the longest chain. Okay? Mm. Then we have 4-methyl hexanoic acid. So सबसे पहले तो हेक्सानोइक बना देते हैं C डबल बॉन्ड O OH. Hexane, which means 6 carbon, including this carbon of hexane, वो उसका भी कार्बन अटैच होगा. You know that ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर होता है. You remember that ना? Mm. ठीक है. सो ये हेक्सानोइक कंप्लीट हो गया हमारा हेक्सानोइक वाला पार्ट. एंड फोर्थ कार्बन के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो 1 2 3 and 4 फोर्थ कार्बन ये बन गया. 1 2 3 4 5 and 6. सो ये आ गया CH3. I'll leave these two for you to complete. Okay. 2 3 dichloro 4 ethyl 2 hexene and this one. I'll make the structure at the end of this lecture. Then we have to draw the isomerism. Isomers हमने क्या डिस्कस किए थे? Isomers क्या होते हैं? Having same molecular formula but different structure formula. So we have to draw all the possible isomers for the structure. Let's try that. It's C5H12. That means it's an alkane. First thing. First तो हमारा सिंगल बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हो जाएगा. 1 2 3 4 and 5 and उनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन आ गए. CH3 CH2 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 and CH3. सेकेंड पॉसिबल हमारे पास क्या हो सकता है? ये तो सिंपल, इसको तो हम पेंटीन बोल देंगे ना. पेंटेन सॉरी. ठीक है. सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आएगा? लेट मी ड्रॉ हेयर. कि अगर हम किसी एक कार्बन को एक मिथाइल को मूव कर दें. CH 1 2 3 and 4. लेट मी ड्रॉ इन द अदर वे ताकि मेरे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कंप्लीट हो सके, मैं मिक्सअप ना करूं. ये CH3 आ गया, ये CH आ गया, C. यहाँ पे एक CH3 अटैच कर देता हूँ. यहाँ पे इसका CH आ गया एंड ये आ गया CH3. ये हाइड्रोजन 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 एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए इसके. दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 and 4 4 इसके कंप्लीट हो गए. वुड यू लाइक टू नेम दिस कंपाउंड? What would be the name of the compound? Um, Let me name the Pentane. carbon. Is it pentane? Why it would be pentane? Pentane तो हमने already बना It लिया. has Now it has a functional group attached to second carbon, so it would be 2-methyl butane. Cause longest chain में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं.
ये एक आइसोमर हो गया, दिस वॉज द फर्स्ट आइसोमर, दिस वॉज द सेकेंड आइसोमर। अगर हम एक और सी एच उसको अटैच कर दें इसी कार्बन के साथ, सो व्हाट वुड बी, ये पहले का कार्बन आ गया, दूसरे के साथ ऑलरेडी सी एच थ्री अटैच था, मैं एक और सी एच थ्री इसके साथ अटैच कर देता हूँ, दिस। एंड मतलब ये वाला जो अब मैं उसको सर्कल आउट कर रहा हूँ विद दिस ब्राउन कलर, मैंने इसको भी सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने पहले क्या किया था, पहले आई मूव्ड दिस टू दिस कार्बन एंड आई मेड दिस आइसोमर। नाउ फॉर द थर्ड आइसोमर मैंने ये ब्राउन सर्कल्ड वाले को मूव कर दिया टू सेकंड कार्बन, सो ये आ गया CH3। नाउ काउंट द कार्बन्स, डू वी हैव all everything full? Yes. One, two, and three. Now the longest chain has how many carbons? Three carbons. So that would be propane. And functional group are both attached to second carbon. So that would be 2,2-methyl propane. Do you get it? Hmm. The C5H10, which means ये क्या है हमारे पास? This is going to be alkene. ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल प्लेन बन जाएगा। ठीक हो गया, व्हाट वुड वी नेम इट, ये हमने किया भी है ऊपर। आई हैवंट मेंशन्ड द हाइड्रोजन्स अलोंग विद साइड, मैं उनके लिए जस्ट लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? The first one's only supposed to have two. ओ हाँ यार, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 120. Yes, 1-pentene. Now we have to draw the isomers as well. So नेक्स्ट सिंपल आइसोमर क्या हो सकता है, मैं सिंपली इसको शिफ्ट कर दूं टू द सेकंड कार्बन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट कार्बन। सो दैट वुड बी, नाउ इसके सेकंड कार्बन के साथ आ जाएगा, इसके साथ हमारे पास 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 एंड 4, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ भी सिंगल कार्बन आ जाएगा, एंड दिस वुड बी लाइक दिस। ठीक है, हमने सिर्फ कार्बन को शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया तो सेकंड कार्बन। सो दिस वुड बी, वो 1 पेंटीन था, दिस वुड बी 2 पेंटीन। तीसरा स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं, अब हम एक को मूव कर देते हैं, एक मिथाइल ग्रुप को मूव कर देते हैं एनीवेयर। ठीक है, इसको मूव कर देते हैं वहां पे सेकंड कार्बन के साथ ही कर देते हैं, सो दिस वुड बी, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सी, इसके साथ मूव कर देते हैं, ओके, डबल बॉन्ड सी, एंड यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसको हम अटैच कर देते हैं इस कार्बन के साथ। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, ये वाली, क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के साथ ही फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन्स के बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं ना, 1 2 3 एंड 4, ओके, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बिकॉज अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। So we have 3 carbons here, OH, which means it's going to be a alcohol family group.
So 1, 2, 3, CH3, CH2, CH, and OH. So this we'll consider this as we have discussed in the nomenclature that the functional group attached to the carbon would be considered the name. We'll start the numbering from there. So that would be 1 propanol because we have 3 carbons into that. So we have 1 propanol because it's attached, the OH group is attached to the first carbon and the longest chain has 3 carbon as given in the question as well. So that would be 1 propanol. The second structure would be, I move this to the second carbon. So this would be like this. OH attached to this one. This H is moved to this place and OH has moved to this place. Just to be clear, the isomers only have the functional group positions change, rest of everything remains in the structure. So here, the second isomer, this would be 2-propanol because now it's attached to second carbon. And we can do one thing that that is the two possible structures that we can draw for this one. So that's what isomers are going to be. For this one, the structure is going to be CH3, C double bond C, CH, CH2, CH3, and with this carbon, we'll attach CH2, CH3, and with this carbon, this would be chlorine. So it's बल्कि थर्ड कार्बन के साथ भी क्लोरीन अटैच होना है. So 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So this second carbon, chlorine, this third carbon, and chlorine, 2, 3 dichloro, 4 ethyl, which means this is the fourth carbon and this is the ethyl group attached to it, 4 ethyl, and we have our carbon-carbon double bond with the second carbon, so that would be 2 hexene with this one. Now let's do the seventh one. We have 3 ethyl, 2, 3 dimethyl, 2 pentanol, which means we are going to have 5 carbons. 1, 2, 3, 4, and 5 carbons, respective hydrogens of this one and this one. These two will have 3 carbon hydrogens. Now we have 2 and 3. Let's see. 2 के साथ CH3 methyl and 2 के साथ ही OH group attached है because we could see here कि 2 pentanol and 2 methyl. So this is first carbon, second carbon, third, fourth, and fifth one. So second carbon के साथ we have an OH group attached and then third carbon again CH3 group attached to it. So we have 2, 3 dimethyl. Third carbon के साथ ethyl group attached है, so that would be CH2, CH3, 2, 3 dimethyl, 3 ethyl. This is the third. 2, 3 dimethyl, 2 ol. So the name justifies. Third carbon के साथ attached the ethyl group. Let me erase this part so you could see everything that I'm trying to explain here. Third carbon के साथ attached है
This ethyl, I'm circling it out with the blue color. Third carbon के साथ attached the ethyl group. Now I'm circling it with the brown color for the 2,3 dimethyl. Second carbon methyl group, 3 के साथ methyl group, so 2,3 dimethyl. And now I'm using white color for 3 ethyl. So this is 3 and वो blue के साथ already circle out हो चुका है, sorry, ओल के लिए, so 2 ओल. This would go for that one. Let me know if you have any questions regarding this one. Now we have these molecular formulas of 8 hydrocarbons, identify the alkanes out of it. So we know the general formulas of alkane, which is CnH2n plus 2. So keeping that in mind, this justifies that this is the one, this is the one, and yes. So we the only alkanes that we have is CH4, C2H6, and C3H8 because these three compounds show this one. Which of the alkane has the You're lowest boiling sharing point? the We know that as the number of carbon increases, the boiling point increases. So the minimum number of carbon is you're with sharing the CH4. syllabus. So it's going to be the lowest boiling point. What are you saying? Your screen is like the syllabus, Ted. Oh, do you see it now? G. Okay. Then the next question is identify the isomer in the compound. So what is isomer? Having same molecular formula but different but different structural formula. So this Br structure and this structure is isomer to each other. And why is that? Because 1, 2, 3, and 4. No, 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 not this one. This one, I guess. We have 4 carbons, so Br इसमें सिंगल Br है. ओके, सिंगल Br किस में है? इसमें नहीं है. इसमें डबल बॉन्ड है तो ये भी नहीं हो सकता. इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता. इसमें 3 कार्बन्स हैं, ये भी नहीं हो सकता. इसमें 3 कार्बन्स हैं, ये भी नहीं हो सकता. द ओनली स्ट्रक्चर वी आर लेफ्ट विद, so these two are the isomers of each other. Then let's go for another one. We have this structure. Now use a different color. We have 2Br here. 2Brs are present where? Here it is present. But as it has only 3 carbons, so this cannot be the isomer of this one. This ये भी नहीं हो सकता because इसमें double bond है. ये भी नहीं हो सकता. And this is not possible as well. So the other isomer that only exists is this one and The last one? the last one. Yes, these are the isomers only. So we have only two isomers present here. That was an easy question. The straight chain alkanes, hexane has 6 carbon, show its in 3 molecular formula, structure formula, and displayed formula. Here again, molecular formula इसका क्या होगा? C6H 14. H14, ये उसका molecular formula हो गया. Structure formula हमारे पास क्या हो जाएगा? वही the long one. CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये उसका आ गया structural formula and displayed formula. I forgot to write CH3 here. This is the I was gonna say 1, 2, 3, 4, 5 and 6 here. This would be the structural formula. Now they have asked us to give the molecular formula for the alkenes with 20 carbon and 32 carbons.
20 carbon, C into 20, H 2 into 42. 20 plus 2. So this would be C20, H42 and C32 into H into 2 into 32 plus 66. 2. So this would be C32, H66. My mental math is so good. Hmm. Ethane reacts with chlorine in a substitution reaction. Draw the displayed formula for the structure isomer when two chlorine atoms are replaced. We have to add two chlorines into that and alongside with the structure. So for that, we can draw it's ethane, which means two carbon, one, two hydrogens, and chlorine attached to this one and chlorine attached to this one. एक आइसोमर ये बन जाएगा एंड सेकेंड आइसोमर ये बन जाएगा कि ये क्लोरीन भी इधर अटैच कर दें सो इसके साथ थ्री हाइड्रोजन आ जाएंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे एंड एक क्लोरीन यहाँ पे सो द सेकेंड आइसोमर वुड बी लाइक दिस अब ये इस वाला जो हाइड्रोजन था ये इस क्लोरीन की जगह पे आ गया और ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एंड दोनों का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा ऑब्वियसली what would be the formula C2H2Cl2 H4 होगा हाँ सॉरी H4Cl2 cause इथेन है ना Mm. now we have write the molecular formula for each compound अब वो हमने ऑलरेडी लिख दिया now we have to draw three structure isomerism for C5H12 तो एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ठीक है ये हाइड्रोजन आ गए एक तो सिंपल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा स्ट्रेट चेन का दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा दिस वुड बी नेम्ड एज पेंटेन Pentane. दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा दिस वन इसके साथ मैं एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ ओ ठीक हो गया या ऐसे करता हूँ इसको मैं सेकेंड कार्बन के साथ अटैच कर देता हूँ सो दैट लेटर ऑन मैं इस मिथाइल को भी इसी कार्बन के साथ अटैच कर दूं इसका नेम क्या होगा हमारे पास टू 2 मिथाइल methyl ब्यूटेन butane. और अगर मैं अब इसको भी रिमूव कर देता हूं तो थर्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आइसोमर बनेगा फर्स्ट कार्बन एज इट इज 2, सेकेंड का 3 methyl नो नो pent टू टू propane. Oh. इट वुड बी टू टू डायमिथाइल प्रोपेन Mm. टू टू डायमिथाइल प्रोपेन देन व्हाट डू वी हैव एज उन्होंने कहा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ऐड करें तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ठीक है 36 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा देन इसका 28 डिग्री सी होगा एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट विद द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन द स्ट्रेट चेन होगा विच वुड बी 9.5 डिग्री सी ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा ये इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन आउट किया हुआ था कि ये बॉइलिंग पॉइंट्स एसोसिएट करें विद द चेन सो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है देन दिस वन सॉरी टू मिथाइल ब्यूटेन ये हो गया 36 वाला ये हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन का कॉज उसके अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन में वो आ गए एंड देन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन एंड नाउ
we have to draw the structure for the isomers, yeah, but one in but two in. This is also given in our उसमें भी है, सिलेबस के अंदर भी है. So मैं इसका जस्ट स्ट्रक्चर डिस्प्लेड फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा हूँ. बट वन इन में तो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 बन जाएगा. एंड बट टू इन में CH3CH डबल बॉन्ड CH3. मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3. यू कुड सी कि मैंने इसको सिंपली यहाँ से यहाँ पे मूव करा दिया. एंड ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया जाके, इसके साथ. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट हो रही है हमारे पास हाइड्रोजन्स के आइसोमर्स के अंदर एंड बॉन्ड्स की. ओके. Okay. Then we have give the structure formula for the two isomers with the molecular formula C3HOH. इसका भी हम कर देते हैं. 3 कार्बन है ना, CH3 CH2 CH2OH. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन आ गया हमारे पास. और फिर हम इस OH को अब इसके साथ अटैच कर देते हैं. तो दैट वुड बी CH3. अब चूंकि ये OH इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो रहा है, तो इसका एक हाइड्रोजन किसके साथ मूव कर देगा, इसके साथ. तो दिस वुड बी CH3. ये वाला कार्बन के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ये एज इट इज ही रहा. ये CHOH हो गया क्योंकि OH अब इसके साथ जाके अटैच हो गया. एंड इसका एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो ये CH3. तो ये दो आइसोमर्स बन गए. ठीक है. Yeah. आर यू पिकिंग अप द पॉइंट्स नाउ? Yeah. The last question is suggest starting compound for making this ester ethyl ethanoate and methyl propanate. अगर हम एस्टर्स की बात करें तो एस्टर्स हमने कंडेंसेशन एडिशन पोलिमराइजेशन में पढ़ा था. वी नो दैट कि जो Ethanol. एस्टर की नेमिंग में पहले वाला आता है दैट शोज द अल्कोहल. एंड जो सेकंड वन वाला होता है वो किसको शो कर रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा होता है. Ethanoic acid. ठीक है. सो इनके नेम्स क्या बनेंगे, एथनो. इनके जो कंपाउंड स्टार्टिंग कंपाउंड्स होंगे, इसका ए वाले का स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होगा, एथनॉल Ethanol. एंड एथनोइक एसिड. इसका क्या होगा, मेथनॉल Methanol. एंड प्रोपेनोइक एसिड. Propan. अगेन मैं ये कल हमने आना है उसके ऊपर भी, एस्टर्स और उसके ऊपर भी आना है. सो प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी, लेट मी क्लियर दैट. Is the A for the last one methyl ethanoate? सॉरी, The next one. मेथनॉल एंड Is प्रोपेनोइक it? एसिड होगा उसमें. No, this one, the next one. Methyl ethanoate. ये Yeah. यू टॉकिंग अबाउट दिस वन. G. हाँ, उसका भी बना रहे हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने को बोला है. सो दिस इज CH3C डबल O CH3. सो दैट वुड बी as you just told methyl Ethanoate. ethanoate. और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. कॉज अल्कोहल से हमारे पास क्या गया, OH.
एंड ये कार्बोक्सिलिक से क्या गया H जब एस्टर्स बनते हैं एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड बी पार्ट में अगर हम लोग आए व्हाट विल द नेम ऑफ इट Uh, wait. I don't know. ethyl this is ethyl Oh. methanoate तो देखो ना ओ एच इसके साथ वो और ये सी डबल बॉन्ड ओ सो Mm. स्ट्रक्चर वुड बी सी डबल बॉन्ड ओ ये एच आ गया एंड यहाँ पे ओ एंड इसके साथ CH2CH3 मैं आपको उनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी एक दफा बना देता हूँ सो दैट यू कुड सी हाउ कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन इज occurring एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये था ठीक है ये मेथनोइक एसिड हो गया एंड अल्कोहल का आ गया इथा इसका एथनॉल का ये आ गया H एंड ये OH ओके अब Mm. यहां से H एंड यहां से क्या रिमूव होता है OH अल्कोहल का OH होता है सो ये हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड O ये H एज इट इज रहा इस OH के साथ का H चला गया सो O एंड यही O बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ So I hope you get the idea of isomers, naming of the compound, structured formulas, displayed formulas, and everything. The next thing that we're going to do is the detailed study of alcohols, carboxylic acid, condensation polymerization, and their respective structures.